I'm going to start this video with a simple experiment. I have taken some water in a glass and now going to add food color in it, that is of orange. Now see, within 1 minute it seems like this. This is the simple example of diffusion. We will study about diffusion in this video now. Now we can define diffusion as the process of movements of substances from region of higher concentration to the region of lower concentration, and this is one of the process through which plasma membrane transports substances inside the cell and allow some substances to go outside the cell. Now rate of diffusion, if we see, it is highest in gases and liquid and very slow in solids. I have shown the experiment with the example of diffusion in liquid. Now for gaseous diffusion example, we can take that you can smell the perfume sprayed one corner of a room from the other corner. Just like that, the smell of food spread from kitchen to everywhere in the house. So these are the simple examples of diffusion. So similarly, many substances like gases, minerals, digested foods, medicines, gases like carbon dioxide and oxygen, these all are distributed through the process of diffusion in the body and the cells. Now we can take example of diffusion फ्रॉम आर डेली लाइफ. जब परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी पूरे कमरे में महक फैल जाती है. यहाँ एक जगह पर अगरबत्ती जलाई जाती है पूजा के टाइम पे, तो पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है. किचन में कुछ बन रहा है उसकी महक. तो दीज आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर डेली लाइफ, दैट इज़ ऑफ डिफ्यूज़न. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्यूज़न इन सेल, हाउ इट टेक्स प्लेस, कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है डिफ्यूज़न के थ्रू सेल से, और कैसे ऑक्सीजन एंटर करती है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट. होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. दैट ऑल वी नो. अब हम पहले से समझ लें कि यहाँ हम दो तरह के एनवायरनमेंट की बात करेंगे, वन इनसाइड द सेल and one outside of the cell. So this is inside the cell. When cellular respiration takes place, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सेल के अंदर बढ़ जाता है in comparison to the outside of the cell. तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर की ओर सेल से बाहर आ जाती है, क्योंकि डिफ्यूज़न में हमने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस जो है हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आते हैं. तो यहाँ पर क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है, इट कम्स आउट थ्रू डिफ्यूज़न एंड आउटसाइड द सेल. ठीक है. सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है. और अब बात करते हैं हाउ ऑक्सीजन एंटर टू द सेल. नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन हैज़ यूज्ड अप इनसाइड द सेल. तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, मीन्स अमाउंट या कंसंट्रेशन कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड ऑफ द सेल. तो बाहर हो जाता है हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का और अंदर लो कंसंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है रेस्पिरेशन में. तो अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिफ्यूज़न, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया को फॉलो करती हुई सेल में एंटर कर जाती है. दिस इज़ हाउ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिमूव्ड एंड हाउ ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. Now the processes in which diffusion takes place, the main processes are gaseous exchange between leaves and air takes place through diffusion. Transpiration from plant जो extra water evaporate कर जाता है from the leaves, that also takes place through diffusion. And transport of food through phloem, that is also takes place through the process of diffusion.